Hello, here Jule to everyone. Welcome to the next part of the vlog. So last time हम ले to Hymia तक पहुंचे थे, and just to reiterate, Hymia is a village, beautiful village, which is in between, almost in between from Leh on the route to Leh to Hanle. So we are now moving on from Hymia, and in this video we will go till there is a village in between called Kesar. अब ये डिस्टेंस तो काफ़ी छोटा है, लेकिन ये वीडियो में आई थॉट इट्स अ राइडिंग वीडियो आफ्टर ऑल, सो व्हाई नॉट गिव यू सम राइडिंग, more riding actually. So, and just to tell you, after that, after we cross Kesar, the video ends, but then the views and the all the terrain and everything starts changing. So that is why I just stopped at Kesar, and then the next video would be like amazing, amazing scenery and everything. So this is the roads. Again, the mountains have opened up. Beautiful weather. So whenever it's cloudy, तो एकदम से it's better to ride in cloud when it's cloudy. अगर वो clouds नहीं होंगे तो फिर वो मज़ा आएगा नहीं. तो रोड्स भी काफ़ी सही हैं और बढ़िया राइडिंग हो रही है, मज़ा आ रहा है. And you guys enjoy the ride. I'll join you again. एक तो I think I have to, the one of the biggest thing I learned from making this video is the wind noise on the camera, and you cannot edit on post. So वो आ गई है, noise आ गई है. Tried best to remove it, but वो noise remove नहीं हो रही है. तो अभी तो ऐसा ही है. अब नेक्स्ट टाइम से आई विल कीप इट इन माइंड, बिकॉज फॉर मी ऑल्सो वो थोड़ा सा इरिटेटिंग सा हो जाता है. बिकॉज मैं खुद अपनी वीडियोस देखते रहता हूँ, तो मुझे सिर्फ इंजन साउंड चाहिए, वो रंबलिंग चाहिए, बस वो रंबलिंग होती रहे और ऐसे बढ़िया रास्ते में बाइक जाती रहे. Nothing else. Like it's such a kind of an ASMR video when it's just rumbling and the bike is just running along in the wide open roads between the mountains. अरे यार, ये कैंपर ये पता नहीं कब से हमारे साथ ही चल रहा है ये, जब से मैं चल रहा हूँ. एंड on the right you can see the river. It had rained heavily for past a week, so the river is like at good levels. Like it's very much below the level it is right now, and it's almost still the road levels, but it was still good. And and over here, Hanle is still 73 kilometers and Chumatang is 48. So Chumatang आता है केसर के बाद, and Chumatang has hot springs. अब I just couldn't edit the, I couldn't cut the riding scene in यहाँ पे.
between the trees with open mountains. I mean, what else you need to ride the motorcycle? And मैं थोड़ा सा English में also I will speak in English a bit because a lot of my friends that don't know Hindi. So वो 50-50 I'll try to be some of it English, some of it Hindi. बाकी और भी कोई भाषा आती तो वो भी बोल देता. So this is Kungyam village. ये भी जैसा कि ये वीडियो में देखा ही है, मैंने भी वीडियो में देखा है अभी. ऑब्वियसली आई क्रॉस द विलेज बट अभी देख रहा हूँ मैं ध्यान से. तो काफ़ी अच्छा विलेज है ये भी. और एक एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पे भी अगर आप ऐसे सीधे मेन जगहों पे जा रहे हो, जैसे हानले जा रहा हूँ अभी मैं, जहाँ पे भी मेन सड़क है ना, जो सबसे वाइडेस्ट सड़क है, उसी को फॉलो करो. जैसे ऊपर एक फोक आया था, देयर वाज अ फोक जस्ट बिफोर. So whatever the widest road is there, you just follow that. You would be safe. Yeah, don't be adventurous and go here and there. Of course you can be, but again, if you want to explore, you can, of course. At this point of time, I had to stand up a bit because, of course, your ass hurts a lot if you're sitting so long. So, because usually I ride non-stop. Hanley is around, as I told in the starting of the video, first video. Hanley is around 3.5 hours on Google Map, and 3.5 घंटे पहुंचने का है. वो तो आप राइड करते हुए जाओगे, वो टाइम दिखाता है, उस पर नहीं जाना चाहिए. 3.5 घंटा है तो उसका मतलब 5 घंटा तो आराम से अगर रुक के जाओगे. बट मैं यूजुअली नहीं रुकता हूँ बीच में, और 3.5-5 घंटा ऐसे भगाते हुए तो बीच में यू अंडरस्टैंड, लाइक ऑब्वियसली कभी ज़रूरत पड़ेगी तो रुक जाते हैं. एक ब्रेक लेता हूँ मुश्किल से, बट यूजुअली बाइक पे खड़े होकर काम चला लेते हैं. स्टैंड अप ऑन द बाइक, रिलैक्स अ बिट एंड देन सिट डाउन एंड रन अवे. A beautiful wooden bridge. Abhi, the new Himalayan has definitely. This was the truck I'm talking about. These are the new VRO trucks, and of course they are from Mahindra. Mahindra के ट्रक हैं तो वो नया है तो बहुत तेज भागता है वो. उसमें सारा रेता वेता भर के it goes really fast. And one thing I think everyone riding the bike should realize, ये जो बीच में लाइन दी होती है आपको गाइड करने के लिए दी होती है कि यार इतनी चौड़ी सड़क है, आप अपनी साइड चल लो. ये देखो, ये मतलब कुछ नहीं बोल सकते सब. वही आई सेड दैट एवरीवन इज रन गोइंग ऑन हाई स्पीड्स. सो आप लेन या सड़क के बीच में तब चलो जब आपको बहुत आगे तक दिख रहा है, जैसे अभी कुछ कोई भी नहीं है. And this time I want to ride my bike on the middle of the road just to capture the video and वो black and white है. And see, this is some places stones keeps on falling. So right now at this point of time ये पत्थर गिर रहे थे ऊपर से. So another thing would be to always have your full face helmet.
Half face helmet, especially in mountains, though I don't see making sense. एक छोटा सा small pebble hits you and it will hurt you. So best है कि full face helmet लेके जाओ. Wind protection करता है, protects you from all these small things. So that is the advice. But बाकी तो आपकी मर्जी. आप बिना हेलमेट के भी जाओगे तो क्या ही होगा, बाद में पता लगेगा वो. So हाँ, middle of the road, yeah, when you know that there is nothing, काफी दूर तक you can see far away, there is nothing on the road. You, of course, it's your road then. You can go and ride wherever you like. But when you see situations like this, now it has shrunken a bit. Now it's from in between the villages. ब्यूटीफुल ट्रीज के बीच में से पहाड़ दिख रहा है. पहाड़ों में नोटिस करो कोई भी पेड़ नहीं है, कुछ नहीं है पहाड़ों में. इट्स ऑल barren लैंड, barren माउंटेन्स. एंड नाउ साइड में, पहले तो नहीं था, ये भी नहीं था, देयर दीस ट्रीज वर नॉट देयर, दे हैव बीन प्लांटेड. सो ऑल दीस ट्रीज हैव बीन प्लांटेड. Call it a climate change or whatever you like. Things are changing in Ladakh also. It's becoming more greener. So this village, which went by its Gaik, Gaik, I think, is the right pronunciation. Hazards on the road. Always be careful. Stones falling from these kind of mountains. Wherever you see, you can actually figure out that which mountains would be the ones where the stones would fall. And there are always signs. हमेशा हर जगह बोर्ड लगा रहता है कि शूटिंग स्टोन्स और वो सब. तो वो सब देख लेना चाहिए चलते हुए. और ऑल्सो बी केयरफुल विद ट्रक्स. कोई भी हो, आर्मी हो, बीआर हो, कोई भी. अभी देखो ये बिल्कुल मिड लेन में चल के आया था. इट्स योर ओन सेफ्टी एट योर ओन हैंड. एंड वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक्स वुड बी टू यूज हॉर्न. बिकॉज अगर कोई नहीं भी है, आपको पता ही नहीं है कोई, and there is no one and the roads are clear, still if you use horn, it keeps you alert. Not just the other people, it's not just in alerts the other people, it also keeps you alert. See the level of river, it's almost at the road. This time the river levels were really high. टाइम भी देखना पड़ता है यार बीच बीच में. हैव टू वॉच द टाइम. तो फिर यहाँ पे आके आई थॉट वी शुड लाइक ईट समथिंग. तो सुबह तो ऑब्वियसली कुछ खा के निकले नहीं हो, और बीच में कहीं पे भी हैवंट स्टॉप्ड. तो और
has have covered a good amount of distance in a very short amount of time. So तो फिर वो ब्रेक तो बनता है. And look at the mountains, look at the light. पहाड़ की शक्ल ही बदल गई है. The face of the mountain has changed, the color has changed. That is what is like amazing. ये दोनों भी रुकना था वो. You wanted में. So ये Army Cafe on the way to Hanle. It's called Indus Cafe. If you want to stop, stop here. It's a very nice place and you get all the food. Army cafes all along the road are the best places to stay, to stop. Look at the mountains. Like on the left side, it's almost reddish, maroon. And then if you go ahead, it's all yellow because it's sandy and rocky and from above. And on the left side across the river, the colors are amazing. Enjoy the ride. I'll just shut up for a while. Keep an eye on reflection on the water. Oh, it looked so beautiful. मुझे मन कर रहा था रुक के फोटो ले लूं, लेकिन राइड करने में भी मजा आ रहा था तो मैंने कहा बाद में लेंगे फोटो फिर. ये नियॉन न्यूज गांव है आई थिंक. पता नहीं, आई एम नॉट स्पेलिंग इट करेक्टली.
बट हाँ, अभी रात याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब है गाँव बीच में, तो मैंने बता दिया क्योंकि ब्रिज भी है ना। Look at this. If you are lucky on your right, you will get the clouds, and mostly everyone is lucky in those terms. Clouds are the game changer. अभी तभी मैंने फिर राइड में बीच में कुछ कट नहीं किया अभी। यहाँ so beautiful, so I think I can watch it for a long time, so बाकी लोग भी कोई तो होगा जो और भी देख सकते हैं। We will either find a way or make one. They did make a way. Beautiful one. अब ये देखो। अरे यार, स्लो डाउन कर लो बाइक। जब कर्व्स में नीचे उतर रहे हो, ऊपर से और नीचे उतरना इजियर टू टर्न द बाइक, नो। जब आप ऊपर चढ़ रहे हो नीचे से, तो यू नीड टू स्लो इट डाउन मोर, बिकॉज वो आप नहीं तो आप बीच सड़क में आ जाओगे, आपको यूज करनी पड़ेगी पूरी पूरी सड़क। एंड एक फन फैक्ट है ऑन दी व्हेन वी टर्न ओवर है, सो ऑन दी माउंटेन्स ऑन दी लेफ्ट देयर इज अ बंच ऑफ माउंटेन्स और काफी सारा इलाका है। उस साइड पे पैंगोंग है। वी आर करेंटली ऑलमोस्ट वी हैव क्रॉस पैंगोंग। और ऑन द राइट साइड behind that mountain range is सोकर लेक। सो अभी आप पैंगोंग और सोकर के बीच में चल रहे हो। यार मतलब वही आगे पीछे है। इट्स पैंगोंग you are crossing, सोकर you will cross, but it's also very far. But just a little bit fun fact, माउंटेन की राइट हैंड साइड की रेंजेस क्रॉस करके you will get to पैंगोंग, एंड माउंटेन की लेफ्ट हैंड साइड की रेंजेस क्रॉस करने के बाद you will go to सोकर, and then from सोकर to सोमरोरी। I think there is a jeep path also, like off-road also from this village, I guess. नहीं, आई थिंक वो गांव पीछे चला गया जहाँ पे आई आस्क्ड टू वॉच द रिफ्लेक्शन ऑफ द वाटर। ये जो ब्रिज क्रॉस किया है इसके पहले, लुक एट द रिवर। ये जो ब्रिज क्रॉस किया है ना, उसके पहले जो गांव था वो था क्यारी गांव था। आई थिंक वहाँ से एक ऑफ रोड जाता है। आई एम नॉट श्योर, बट हाँ। एंड हेयर वी आर अबाउट टू रीच केसर।
केशर एक्चुअली गांव का नाम है एंड हेयर आवर वीडियो विल स्टॉप and I'll see you in the next video and the views are obviously as you can see views will get crazy because weather आप देख रहे हो the weather ahead is really awesome really amazing गांव के एरिया में हॉर्न मारते हुए चलो who knows might see rainbow or two आगे जाके बारिश हो रही हो तो हानले के रास्ते में रेनबो तो आराम से बहुत सारे दिख जाते हैं एक तो यार ये रियर व्यू मिरर उस टाइम ढीला था so with because of wind Keshar is a beautiful village. All right, see you guys on the next video.